Resume recording. सेकंड। जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय। तो देखिए अभी क्या है, कबीर जी क्या बोलते हैं हमको। कबीर जी का बहुत बढ़िया सा चीज है। अभी फर्स्ट थिंग है कि कबीर जी के बारे में क्या बोला जाए, तो मतलब जिंदगी का सारा चीज उन्होंने एक साथ में रख दिया है। अभी ये प्रोग्राम लॉन्च करने का एक रीजन था। एक दिन रात में मेरा एक अराउंड एग्जैक्टली 2 बजे मैं एक्चुअली जग रहा था, बिकॉज एनीवे मेरा यूएस वाला प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। तो उस टाइम पे मेरे को एक वीडियो आया। तो उसके अंदर में एनकाउंटर ऑफ गोरक्षनाथ जी विद द कबीर जी। और गोरक्षनाथ जी सबको मालूम है। आई होप सो एवरीबडी नो गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ जी मालूम है ना आपको, जो नवनाथ जो परंपरा है, उसके अंदर में जितने भी वो नवनाथ आते हैं, तो उसमें गोरक्षनाथ इज नोन एज द मोस्ट पावरफुल वन एक्चुअली। तो गोरक्षनाथ जी के पास में ऐसा पावर था, मतलब ऐसा कर देंगे तो कोई भी चीज जल जाएगा। ये एज अ वेरी गुड तांत्रिक साधना, वो मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। तो उनका और कबीर जी का एक इंटरेक्शन मैंने सुना, एंड दैट इंटरेक्शन वाज वेरी ब्यूटीफुल। और फिर मुझे समझ में आया कि कितना सिंप्लीफाइड वे से कबीर जी इज गिवन अस द लाइफ। सो आई विल जस्ट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट नाउ, बिकॉज थोड़ा टाइम मेंटेन करेंगे। तो कबीर जी के बारे में बोला जाए तो 15th सेंचुरी। सो तुलसीदास जी, कबीर जी, सूरदास जी वगैरह, ये सब एक ही टाइम के ये है, मतलब इन दैट सेंचुरी में हुए हैं लोग। एंड ही इज एक्चुअली द लाइक अ स्पिरिचुअल मास्टर पोएट, एंड लाइक his biggest contribution is the Kabir Doha. एंड वी पुट द वेरी सिंप्लीफाइड वे ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया। क्या बोलते हैं? लव, कंपैशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सिंप्लिसिटी। और हम लोग इसी चीज पे काम करेंगे, क्योंकि जब ये चार चीजें आपकी जिंदगी में आ जाएंगी, व्हेन दिस फोर थिंग्स कम्स टू इन योर लाइफ विल बी नॉट द सेम। तो देर इज अ लॉट ऑफ कबीर दोहास बाय द वे, लेकिन वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द most profound, and which are most actually what you can call exactly कि um, सबसे ज्यादा काम करते हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, या जिनके अंदर में कुछ लाइफ लेसन मुझे फाइंड आउट हुआ है। तो वी आर गोइंग टू वन दैट वन। लेकिन अगर बिफोर वी गोइंग टू दैट वन, तो कबीर जी का मैंने जैसे बताया आपको, तो कबीर जी का पूरा शिक्षा जो है चार चीजों में आप डाल सकते हैं। यू कैन पुट द होल कबीर का टीचिंग्स इनटू द 4 लेसन्स। तो पहला लेसन से लव एंड कंपैशन। And I'm telling you that one, there is nothing bigger than this one, love and compassion. जिंदगी में जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट अगर आपके पास में लव एंड कंपैशन है, तो दैट इज द बिगेस्ट, आई एम टेलिंग दैट वन, दैट इज द फर्स्ट पिलर, फर्स्ट टायर ऑफ द एवरीथिंग। सेकेंड, जो कि स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा लर्निंग है, ऑन द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ। तो उसका मतलब क्या है? ओनली वन थिंग विच इज परमानेंट इन द वर्ल्ड इज द इम्परमानेंट। सब लोग क्लियर है? वन थिंग विच इज परमानेंट इन द वर्ल्ड इज द इम्परमानेंसी। सो ऑन द ट्रांजिट नेचर ऑफ द लाइफ, तो एवरीथिंग इज इम्परमानेंट है। तो आप चाहे राजा हो या रंक हो, तो लाइक एक हर एक को जाना ही है। तो प्लीज रिमेंबर, एंड दैट्स व्हाट कबीर जी इज टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके ऊपर में द पावर ऑफ नाउ की बुक लिखी है, माइंडफुलनेस है, बुद्धा की टीचिंग है, सब कुछ कम्स टू द प्रेजेंट मोमेंट। एंड देन द थर्ड बिगेस्ट लेसन फ्रॉम द कबीर का दोहाज इज एग्जैक्टली सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो कबीर जी बोलते हैं ना कि जब मैं मतलब व्हेन आई वेंट टू फाइंड आउट द fault into the others, or the papa into the others, or the some problem in the others, I find out that one कि मेरे से बढ़कर impure, मेरे से बढ़कर पापी, मेरे से बढ़कर कोई और कुछ नहीं है, because I am my mind. And the fourth is the simplicity, and I'm telling you now, जापान से लेके अमेरिका तक everybody is talking about the simplicity now. So everybody is talking about the simplicity. Actually, after the one level of the materialistic things, simplicity is everything. तो अभी चार में से आपके जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? जस्ट राइट इनटू द चैट बॉक्स विच वन यू लाइक द मोस्ट। ये जो चार लेसन है आपके जिंदगी में, बिकॉज दिस इज नॉट अ थेरोटिकल प्रोग्राम, माई कंसर्न और माई अपील टू यू इज टू इम्प्लीमेंट इन टू योर लाइफ। तो चार में से आपको कौन सा अच्छा लगा? सो बिफोर वी गो टू द फर्स्ट दोहा ऑफ द कबीर जी, ऑल फोर ऑल चार ही हमारे जिंदगी के पार्ट है, चार चक्के बोल सकते हैं। बट विच वन यू लाइक द मोस्ट एंड विच यू गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट इमीडिएटली? फॉर मी डेफिनेटली ऑल फोर, बट यस, इट्स अंडरस्टैंडिंग हिमांशु जी ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ, बट यस, फॉर मी लव एंड कंपैशन ऑल्सो। If you ask me, I'll be also going to that. Simplicity, very amazing. I'll be take simplicity also, like a very, very important. तो ठीक है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ बोला अपना। तो
तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इनटू लाइफ। और ये बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है। ओके, तो लेसन्स आई कवर नाउ, विल बी नॉट गोइंग टू देम नाउ। सो लेसन वन, लेसन टू अगर आपको करना है ले लीजिए। लव अदर्स अनकंडीशनली, प्रैक्टिस कंपैशन टुवर्ड्स ऑल, एंड एक्सटेंड फॉरगिवनेस एंड लेट गो। आई एम टेलिंग यू, इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। क्या है ना, बस अभी अभी कल एक मुझे किसी ने न्यूज भेजा, उसमें लिखा था कि किसी ने अपना जो स्कूल टाइम में फोर्थ स्टैंडर्ड में किसी का झगड़ा हुआ था, किसी का इंसल्ट किया, तो उस आदमी को किसी ने 60 ईयर्स के बाद में उसका मर्डर कर दिया। तो क्या है, ठीक है, कोई झगड़ा हुआ, किसी ने इंसल्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? और 60 साल के बाद में क्या उसमें है? तो 70 साल में अगर आपके अंदर में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई तो फिर क्या आया एक्चुअली में? सो लव अदर्स अनकंडीशनली, व्हाई? बिकॉज लव के अंदर में ना एक बहुत सिंप्लीफाइड लॉ है। आप दूसरे को प्यार कर सकते हो, आप दूसरे से प्यार नहीं पा सकते हो। यू कैन नॉट फोर्स अदर्स टू लव यू, बट यू आर द चॉइस टू लव अदर्स। लविंग अदर्स अनकंडीशनली, बिकॉज उनका जजमेंट या प्रीजस्टिक करके नहीं कर सकते हो आप प्यार। एंड लव हैज द पावर टू हील एंड यूनाइट द ह्यूमैनिटी, एंड इट स्टार्ट्स विथ यू। तो पहला चीज आपको लव एंड कंपैशन में याद रखना है। देन प्रैक्टिस कंपैशन टुवर्ड्स ऑल। कंपैशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इज अ दया। और कबीर जी बोलते हैं उनके एक श्लोका में, जहां पे दया है वहां पे सब कुछ है। And that's what he told to the Gorakshanath ji also. So Gorakshanath ji told, I can walk on the water, can you walk? कबीर जी बोले, सारी चीजें में मुझे कोई ये नहीं है, मेरे अंदर में खाली प्रेम दया और मतलब ये सारी चीजें मैं करता हूँ, और जब वो है तो मैं नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर, योर स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। तो योर फर्स्ट काइंड एक्ट ऑफ काइंडनेस आज की लिख लीजिए। आज आपको 333 लोगों के साथ में स्माइल करना है। अगर आपको लोग नहीं मिले तो भी आपको स्माइल करना है, लेकिन आज दिन में सुबह से लेकर रात तक आपको जो भी जहां पे मिलता है, वेन एवर यू मीट एनीबडी यू हैव टू स्माइल। सो योर टारगेट इज टू स्माइल विद 333 पीपल टुडे। हाउ मेनी पीपल? 333, which is highly impossible, because on an average normal human being meets to the some 50 to 60 people. तो आपको ढूंढने पड़ेंगे आज। तो आप एक स्कूल में जाइए, कहीं पे भी जाइए, बट यू टू स्माइल। सो प्लीज राइट डाउन हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू स्माइल। 333 टाइम्स। मेरा तो हो गया कुछ 25-30 टाइम आप लोगों के साथ में। सो द कंपैशन एंड दैट स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, just giving the helping hand to somebody can be create the profound impact on the world. And third point is the extend the forgiveness and let it go. So forgiveness liberates the hearts and the mind. प्लीज रिमेंबर दैट वन। मैंने बहुत लोगों के साथ में काम किया है। मैं अंदर में अगर मुझे किसी पे चिल्लाना है ना, तो आई बी शाउट ऑन देम, बट आई बी फॉरगिव देम इन द नेक्स्ट मोमेंट। तो मैं पकड़ के नहीं रखता हूँ यार, मुझे सब कुछ रहता है, लेकिन पकड़ के कुछ नहीं रखते हो। तो कितने लोग हैं, हाथ ऐसा कीजिए, लेट इट गो। जितना भी निगेटिविटी, लेट इट गो। जितना भी वट एवर इज द प्रॉब्लम फ्रॉम द वर्ल्ड, लेट इट गो। वट एवर इज दैट यू आर होल्डिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, लेट इट गो। वट एवर इज द निगेटिविटी अबाउट समबडी, लेट इट गो। तो हमको इसको लेट इट गो करना है हमेशा, लेट इट गो। आई एम टेलिंग यू, जाने दो इज लाइक अ बिगेस्ट मंत्र ऑफ द लाइफ, बिकॉज फॉरगिवनेस लिबरेट्स द हार्ट एंड द माइंड ऑफ आवर सेल्फ फर्स्ट। And will we see there is at least 5 to 6 dohas talking only about the forgiveness and the love. So will we come to that point? I told you the transient nature of the life. तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वन की सबसे बड़ा लर्निंग जो है, एट इज द impermanence of the life. So like in the game of the life, you know, like one day you are very high energy, one day you go down. One day you get a good news, one day you get a bad news. There is a sun, there is a moon, there is a darkness, there is a light, there is a positive, there is a negative, there is a God, there is a devil. Everything is there. That is called as the impermanence. So it's called as a law of duality also. And this is the law of nature. This is the law of universe also. So impermanence as a teacher, सब कुछ बदल रहा है. So you just tell that one now. सब कुछ बदल रहा है. Everything is changing. Everything is changing. The permanent thing in the world is only the change. So the permanent thing in the world is the impermanence. And there is nothing bigger than that one, impermanence as a teacher. And the day you understand anicca, whole Vipassana, whole Buddha teaching, everything is on that part. And embrace the beauty of the change. People ask me, oh sir, oh, you know, like one day I feel very nice, one day I feel very this one, and all these things. I told that is the beauty of change. See, you are understanding the importance of that feeling good, because there is a feeling of the bad also, or feeling of the pain also. So the pleasure will be there when there is a pain. So please remember, embrace the beauty of the change. So the moment you feel everything is changing, let it go.
you don't get a single stress on your head. Jane do. Everything is changing. Then live fully in the present moment. I don't have to tell more than this one. And this is missing in the world. People thinking about the past or they're thinking about the future. Oh, past mein kya ho gaya? We done this mistakes. This is what is happened. And what they're thinking future. Oh, what will be happen? I want this much of money. I want this. I want that, and everything. But please remember, past is gone and the future is uncertain. So he's telling completely in the present moment. And please remember one thing: come in standing position. Keep your both the hands and say to yourself, life is in the present. Past bring the tears, future bring the fears. So I promise myself that I'll be live in the present moment. So ensure that when you live into the present moment, don't miss on that part. Then this is the most important. This is my breathe mantra also, be and make. Be and make is what, instead of commenting on others, how the power of self-reflection. Please remember, this world works in difference. So pause and reflect. So Kabir is telling that one, go to the self-inquiry, go to the self-understanding, go to the self-reflection. So pause and reflect. So today's your homework is the self-reflection. Act of kindness is to smile with the 333 people. And second homework for all of you is to the self-reflection. Self-reflection matlab what? Find out your own strength, weakness, opportunity, and the threat. It's called as a SWOT analysis. SWOT analysis is nothing but a self-reflection. And how many of you are from corporate world? कितने लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, धीरेन जी है. हाउ मेनी ऑफ योर बिजनेस पीपल? तो हिमांशु जी आप क्या करते हैं? एनीवे, सो टाइप कीजिए. तो सम ऑफ यू आई नो अबाउट दैट वन, सम ऑफ यू आई डोंट नो. तो इफ यू कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, if you go to the corporate world, one thing will be the common. And whenever they hire somebody, they do the SWOT analysis. That is very external level of the SWOT analysis. I recommend you to do the internal level of the SWOT analysis. हम कितने अच्छे हैं, हम कितने बुरे हैं, our positive, our negative, best we know. क्यों मालूम है? You want to know the secret? How many of you know the हिंदी? एक सॉन्ग सुना है आपने, चेहरे पे चेहरे, चेहरे पे चेहरे, कितने चेहरे? ये दुनिया में मालूम है, एक रिसर्च हुआ है, उसके अंदर में दे फाइंड आउट कि पीपल हैज द 9 फेसेस. सो पीपल आर द हैविंग द 9 मिनिमम पर्सनालिटीज. तो इतने चेहरे पे चेहरे होते हैं हमारे. तो हमारा कौन सा चेहरा हम लोग कहाँ पे दिखा रहे हैं? घर में वाइफ को मार रहे हैं और बाहर जाके दूसरे की वाइफ को प्रेज कर रहे हैं. तो ये चेहरे पे चेहरा है. दिस इज द चेहरे पे चेहरा. डिड यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग अंडरस्टैंडिंग? मतलब खुद के वाइफ का कोई कीमत नहीं और दूसरी की वाइफ बहुत अच्छी है, एंड वी इवन डोंट नो अबाउट देम एग्जैक्टली, करेक्ट? तो दिस इज कॉल्ड एज द चेहरे पे चेहरे. So please remember, you only know that one, what is the best in you, what is the good in you, what is the bad in you, what is your strength, what is your weakness, what is your threat, what is your opportunity. Nobody can transform you except one person in the world, that is you yourself. And there is a self-awareness. Now I see in this young generation, now these young generations, they have the emotional instability. Too much. How many of you are the kids more than 10, 15 years old? And you can see that one, it's handling them is not so easy nowadays. कितने लोगों को मालूम है? हाथ ऊपर कीजिए. कितने लोगों के बच्चे हैं कि जो 10 स्टैंडर्ड में जाते हैं वगैरह, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट देयर इज नो इमोशनल स्टेबिलिटी, एंड दे ट्राई टू शो देम एज अ टाइगर बट दे आर लाइक अ कैट. So please remember, you have to be understand that one, self-awareness, your true nature. And mindfulness, I'm telling you that one, we can take the 1 day workshop, 2 days workshop only on the mindfulness. And that's what Kabir is told, that one, mindfulness, living in this moment, living with the intention. So मैंने 2 homework दिया है. How many of you understand what are the 2 homeworks to do it? Simplicity. Government bank, okay, fine, no problem. So even government bank, they do the SWOT analysis nowadays. I given you the 2 homework now. So what is the first one? Vijay ji is told 330 times smile. See, please remember, smile is easy, but 333 times in a day. That is the most important. 333 times, get the opportunity. Or if you don't get opportunity, watch the some, like a beautiful show. And what is the second homework? What is the second homework? Self-reflection. So self-reflection में what 4 questions you have to ask?
कौन से 4 क्वेश्चन पूछने हैं? व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेस, व्हाट आर माय अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ, एंड व्हाट आर द थ्रेट इन माय लाइफ. Simple example, suppose now you have the habit of getting very angry. Now what is a threat? Actually, see, this angerness is a one type of the emotion, but it can be destroy a lot of things to you, your peace of mind, your clients, your life, your relationships, your family, everybody. So getting angry, you feel that one, it is like a threat. It cannot be the opportunity. Yes, in some cases it is opportunity, but not every time. So this is called as a kick and hug. Okay, final lesson is there, simplicity. See, guys, if you ask me, my whole life, people came to me and people ask me, very good, Sarvananji, very nice. So 330 is short, very good, Sandhya. So big simple question is there, guys, like a simplicity. See, people ask me about financial freedom. Financial freedom is not that how much money you will be get. Financial freedom is that one you are getting more than what is your requirement. And please remember, there is a big difference between the need and the want. How many of you know the difference between the need and the want? Now, wearing the clothes is a need, food is a need, sending your kids to the school is a need. Now, sending to your school is a need. But now, because your friends send their kids to the international school with a 10 lakhs fees, you are also copying them, then that is called as a want. That is not the need. You got my point? Somebody bought the BMW and then you're feeling, oh, my Maruti is not a sufficient. And then you are putting that one. See, car may be your need, but the BMW or the Mercedes is your want. Because at the end, that car is giving you the same output, correct? So please remember, my dear friends, there is a need and simplicity is the most important fight. So find the joy in the simplest things. That's what. People think that there is a joy in the very big things when I buy the home and the car and I get the crores of rupees. I'm telling you that one, guys. I work with the billionaires and millionaires. So it is not related. But it is not like that way you have to be bankrupt. No. You have to be have the good money, you have to good mindset. You require everything, health, relationship, career, money, and spirituality. But it is not to make unnecessary complexity. Now with complexity, because maybe your wife is telling, oh, our neighbor is bought the new dishwasher, get me the dishwasher. Now you're getting the 1 lakh dishwasher and again you are adding another EMI, your life will be the complex. See, now let go of the materialistic desire. There is nothing bad in the materialism, but please remember, too much of attachment is the materialistic desire cause you the biggest problem. So reduce our attachment to the material possessions. Why? Because if you are changing your furniture every year, how many of you have this habit? You want to do something new in your home every year. Now, I don't know to give the example of my friend or brother or somebody, but there are some people who actually buy the new sofa every year. And I am the person, I have my sofa from 15 years is the same sofa. I'm not feeling it from inside. I'm not telling I'm a great or I don't have the money. No, both the reasons are not there, but I feel the need. My need is fulfilled. Why I want to do the one? For whom I have to show up? I have the same TV from the 18 years. Same 32 inches TV is there from 18 years. So I'm not telling that one. But because I don't want to be get another very big TV or something like that for that one, it's not my, like a need. It can be the want. What is a need? TV may be the need, but bigger TV is the want. So please remember that one. So there is a big difference in this simplicity. And this is a cultivate the inner peace, and only simplicity bring the inner peace. Inner peace and tranquility come with the simplicity. So please remember that one. We are going to learn how the Kabir is telling his doas and everything. Now it is a time. So this was your first day. These are the 4 most important part. So so I'm going to take the first doa now. So you have to be pray to the Kabirji first, because this is the knowledge he's given to us. So just you have to say them the thank you and cultivate the attitude of gratitude. And this is the first shloka. See, now this is my favorite shloka in one way, because doha actually is called as a doha. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए. So please remember one thing, दुख काहे को होए. Please understand one thing, people remember the God only when there is a problem. How many of you seen that one? Oh,
This is not happening, that is not happening, my life is not working, I'm not happy, this problem, that problem, or something has happened, somebody died, and you remember the God. You get a smashan vairagya. And then once everything is okay, things are getting settled down, you don't remember the God. So what Kabirji is telling that when, if you thanks to the God, or have the gods as your part. Like some people was asking, whenever I walk, whenever I go, I just use the one mantra. Jai Sri Ram, Jai Bajrangbali, Om Namah Shivaya, Hare Krishna Panduranga. So this is the mantra I use, and for this one I don't require the efforts. In a whole day, 1,500 times it's happening automatically. I go to the washroom, it happens. I sit, it is happen. I stand, it is happen. I smile, it is happen. I teach, it is happen. So please, that is a cultivate. So I'm not, just telling, oh God, what is this happen? Oh God, what is that is not happen? This one, nothing. So please, everybody repeat after me. So दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई. जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए. So the your today's final part is, so please remember, and please remember, this is not like a God is like only the Krishna, Rama, or Shiva or something. No, the God is a concept which creates, which sustains, which recreates. It's called as a God, generator, operator, and destructor. So thank you very much. So please remember this shloka today. Everybody has to write this shloka 9 times and read it for 9 times, and shout it for 9 times. So please remember this every shloka, and what is your understanding from this shloka. I'll be open up that group, and please share your understanding, not the AI understanding or the Google understanding or any understanding, your understanding. What Kabirji is telling, if you are remembering the God into your good time, then when there will be the pain, then even your even the surgery has to be happen, and there is no anesthesia, still you can be managed. Why? Because you are completely into that realm of the universe. So please write down this shloka for 9 times. I'll be share this slide to all of you right away, and you have to be take care of this one. So I'll be sharing you that one when we cover every day. So this is your first day actually, man. So remembering dukh mein smiran sab kare, sukh mein kare, ulta, it's like that one is there. So what is the dukh? What is the simiran? What is the sukh? So please remember, I will be cover this part. So interpreting the lessons. So this is a mindfulness, embracing the pain, staying the humble, and can you smile even there is a pain? And that is what is the speciality. So thank you. God bless you all. Please write it for 9 times. I'll be open up this group for all of you. If I go to the Kabir Doha, I'll be make sure that when you can be updated in this group. So I'm giving you the idea. Maybe there are some people who are not active or not here, but they'll be there. So I'm just giving you the group permissions. So before we close the things, I don't know, but we don't want any spam. But I'm sharing you today's first part. And what opens up to you, please just reply to this message. So thank you very much. God bless you all. So दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई. जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए. Biggest secret of the life. Biggest secret of the life, guys. Biggest secret of the life. So your Simiran means whatever is there, you are happy, you are joyful, you are santosha, contempt. That's it, guys. I think so. I took a little bit more time. Tomorrow onwards, we will maintain the timing. So I given you the permissions, whatever you are learning. And please remember, whoever will be do the best analysis, whoever will be do the all the homework, who will be the actively involved, I'll be give them the very amazing gift. And the gift will be declared in the coming session. So सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. Om Shanti Shanti. I'll be recommend to the homework now only in 5 minutes. It takes only 5 minutes, not more than that. Thank you. God bless you all. Have a nice and fantastic day. Jai Sri Ram, Jai Bajrangbali, Om Namah Shivaya, Jai Kabira. धन्यवाद.